Hello students, our next topic is uh, under the money, Indian monetary system. Indian monetary system is a unlimited legal tender. It is known as unlimited legal tender. This is the Indian currency system. What it means? It means that the Indian currency can be used to pay any quantity of debt. आप भारतीय करेंसी को अनलिमिटेड अमाउंट में पे कर सकते हैं अपने ट्रांजैक्शंस के लिए, नॉट बैड बाय एनी अमाउंट, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, बिलियंस, एनी अमाउंट you can use Indian currency to pay that transaction in cash or in credit. So, nobody can deny to accept that Indian currency. भारत का पैसा, भारत की करेंसी को कोई भी आदमी अनलिमिटेड अमाउंट में एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है, और नहीं आप अनएक्सेप्टेड अमाउंट देने से आपको कोई रोक सकता है. एनी अमाउंट यू कैन इमेजिन you can pay in that Indian currency, that is unlimited legal tender. Example, 5 rupees coin आप अनलिमिटेड अमाउंट में दे सकते हैं. 10 करोड़ रुपीस का पेमेंट आप 5 रुपीस कॉइन में कर सकते हैं, मोर देन 10 करोड़. 10 रुपीस कॉइन में आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ योर लोन और ट्रांजेक्शन यू कैन पे. 1 rupees coin you can use to pay unlimited quantity of your transaction. But in a case of coins less than 1 rupees, they are banned. अब वो abolished हो गए हैं. They are not in the transactions. 1 रुपए से कम के सिक्के भारत में चलन में नहीं है. 4 साल पहले इनको बंद कर दिया गया. पर फिर भी देयर वॉज एनी रूल कि आप 1 पैसे का सिक्का 10 रुपीज़ तक 100 सिक्के आप दे सकते थे. 50 पैसे का कॉइन आप 100 कॉइन्स एक मूवमेंट में आप एक टाइम में पेमेंट कर सकते हैं. नो बडी कैन डिनाई. आज भी सिक्के जो इकोनॉमी में है, इफ़ दे हैव नॉट बीन विड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमी, दे आर इन द सर्कुलेशन. जितने भी सिक्के भारत की अर्थव्यवस्था में अभी भी अवेलेबल हैं, वो इकोनॉमी में रोटेशन में है. नो बडी कैन डिनाई टू एक्सेप्ट इट. अगर वो ऐसा करता है तो अपराध करता है. ही हैड टू बी पनिश्ड अंडर लॉ. बट इंडियन सिस्टम इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शन ऑफ मनी. द फंक्शन ऑफ मनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 parts. फर्स्ट इज प्राइमरी पार्ट, secondary part, and contingent functions. So, primary functions, first is medium of exchange. The prime factor या prime utility या prime use of this money is, it is considered as a medium of exchange. Every commodities, goods and services will be exchanged in the mode of money. आप हर चीज़ की कीमत को केवल पैसे में ही बदल करके एक्सचेंज करेंगे. फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कॉमोडिटी एंड सर्विस. सेकेंड, इट मेजर्स द वैल्यू. ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूड इन मनी. व्हाट आई एम टीचिंग, व्हाट डॉक्टर इज गिविंग सर्विसेज, व्हाट द scientist is giving his services, what a pencil is giving services, whatever goods and services are, even your tour and travels and your journey, all the things, goods and services are measured in the value that has some money value. The second function of the money is secondary function. Now, first 2 functions are medium of exchange and it stores the value. It is a medium of exchange and measures the value. The third important function is stores the value. Money stores a value.
and it never increase or decrease with the time. 2000 rupees note will remain a note of 2000 till it is alive. जब तक 2000 का नोट इकोनॉमी में है, द वैल्यू विल नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज. सो द वैल्यू ऑफ मनी inherent in that currency only, or it never changes for a long term. Secondary functions are also there for money. The secondary functions are first, standard for deferred payment, means your unlimited transactions will be executed by money only. That is unlimited legal tenders functions. So your deferred payment of any quantity, even for 50 paisa, 10 paisa to millions and billions, all transaction mode will be the standard money. भारत की स्टैंडर्ड मुद्रा में ही या किसी भी कंट्री की स्टैंडर्ड मुद्रा में you can pay your unlimited transactions. You can deal with unlimited transaction. Next, the secondary function is transfers the value. Stores the value is separate, transfers the value is also separate. Money transfers the value whenever the hands changes or the money changes the hand, the value also changes. Yeah, transfers. Suppose I have my mobile, my mobile, if I give to anyone, that possession of that mobile, yeah, title of that mobile remains in my hand. This is my house. If I give this house to anyone, the title or the ownership remains in my name. But in case of money, if the money changes from one hand to another hand, the value transfers from my hand to another hands. एक 500 का नोट जो मेरे हाथ में है, वो उसकी ट्रांसफर वैल्यू, उसकी वैल्यू मेरे हाथ में. As soon as I transfer that 500 rupees note to the hand of another, the whole value from my hand transfers to in his hand. I can't claim that this note is my note. In case of goods, I can claim that this house is mine, this mobile is mine, I have a title holder. But in the case of money, if the money transfers from one hand to another hand, the value from one hand to another hand also transfers. So money transfers the value. फिर नेक्स्ट फंक्शंस भी हैं कॉन्टीजेंट फंक्शंस. Contingent functions like money measures your credit. The credit of property, movable or immovable, or the name also. Your name too has a property, is a value. आपका नाम इकोनॉमी में या समाज में, सोसाइटी में आपकी जो इज्जत है, that reputation also have a credit. And that reputation, the movable property or immovable property is measured in a credit, and the base of that credit is money. मेरी हैसियत 4 करोड़ की है. It means my credit of my name, my position in this economy is of 4 crore rupees. या मेरा घर, that plot has a credit. I have a credit person because I have one bike, one movable property or immovable property. I have some gold, so that gives me a credit in an economic transaction. So all the credit is measured in money only. So next is liquidity. Here the money is the most liquid form. Money makes the liquidity. So money has a different types of categories: credit money, representative money, and paper money. So the money is the most liquid form. Here we will see this in the next topic also, liquidity. All the assets, movable or immovable, and the representative money, coins, all they are the converted into liquid, and this liquidity
has a representation in money only. My house, this is of 10 lakh rupees suppose. So this house is liquidated in the form of money. कि इसको तरल बनाया जाता, तरल का मतलब पानी नहीं है, मीन्स इट कैन बी इजिली यूज्ड. Ice, you can't consume ice, you want to use the water only. So though ice is also water, but it in a hard form. Gold is liquid, but in sense it is harder liquid. If I need 10 lakh rupees and I have 1 quintal of 1 kg of gold, that gold cannot be easily converted into money. First I have to go to the bank, deposit it or convert it, or go to the goldsmith and convert it or sell it. It will consume time. But the money, 10 lakh rupees in a cash with a paper money, is the most liquid form. So money in all sense, broader or smaller, is represented in a liquid form. My land is a hard thing, gold is a hard property. When we talk that money, it is represented in the liquid form. First I convert that land into money, that is value of that land is of suppose 1 crore rupees. So the land 1 acre converted into 1 crore rupees, and then we say that it is in liquid form. Next function of money is the best utilization of resources is done under the money. We can easily divide the money, and by division of the money everything can be used better. आप उसको पैसे, रुपए and in other amounts you can divide. हाफ एप्पल तो हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, मगर हाफ रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हो सकता है. और इफ़ आई एम मेकिंग ए ट्रांजेक्शन इन द लैंड्स, सो एक या 50 एकड़ की जहाँ बात होगी तो वहाँ पर एक आध स्क्वायर फीट जमीन ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है. हाउ टू मेजर दैट? बट इन द मनी द कैलकुलेशन इज एग्जैक्ट, it does not differs. So utilization of all the resources, when the resources are converted into money, they can be best utilized. The important function of money is solvency, guaranteed of solvency. It means the money guaranteed that this person has an ability to pay his solvency. ऋण अदा करने की क्षमता की गारंटी मनी में दी जाती है. सपोज मैं कर्जा लेता हूं और मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी, नेम, फ्रेम या मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक हूं. सो दैट प्रॉपर्टी गिव्स द गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ मनी. कि 25 एकड़ का आई एम ए ओनर एंड दैट 25 acres guaranteed that this person is comfortable or eligible to pay his debt. अपना ये कर्जा उतारने का सक्षम है, because 25 acres land amounts to this much rupees in cash. Value of this 25 acre rupees is this much. So the guarantor of the solvency is expressed in the money form only, not in the form of land, not in the form of gold, not in the form of any other property, movable or immovable. और in the name also, आपकी साख जो नेम है आपका, उसके में भी आपकी गारंटी नहीं होती है कर्ज उतारने की. गारंटी होती है when we express that guarantee या solvency in money only. Next function of the money is distribution of national income. All the income is distributed to the person or to in a per capita income in the form of national income, in the form of money. Suppose भारत में नेशनल प्रोडक्शन में गुड्स बहुत सारी प्रोड्यूस होती हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आज हर आदमी की पास की एक वैल्यू एक कार है, या इतने क्विंटल इंडिया में अनाज हुआ तो हर व्यक्ति का अनाज का शेयर इतना हुआ. तो वी कांट एक्सप्रेस द पर कैपिटा शेयर्स या होल्डिंग्स ऑफ ए पर्सन्स और इनकम ऑफ नेशनल इज डिवाइडेड इनटू द पॉपुलेशन इन अ फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. That goods and services are converted or measured in the money, and then we express that the distribution of national income is done in the form of money.
कि हर व्यक्ति की नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम इतने रुपीज़ है, हम अमाउंट रुपीज़ में बताते हैं, ना कि इन द प्रोडक्शन। सो दिस इज़ द वन मोर फंक्शन। इसके अलावा भी मनी के कुछ इम्पोर्टेंस है।